फाइनल मुकाबला खेला जाना है महिला वर्ग का। आमने सामने दो बड़ी टीमें हैं, एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ गुजरात। टॉप सीड है गुजरात, सेकंड सीड है महाराष्ट्र। तो आज ये द्वंद्व, ये जंग बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और बड़े नाम हैं इस मुकाबले में। एक तरफ हैं गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाली अंकिता रैना और जील देसाई, दूसरी तरफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाली ऋतुजा भोसले और वैष्णवी आडकर। इन नामों को टेनिस प्रेमी भली भांति जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेलों के पिछले मुकाबलों में टेनिस के जो खेल प्रेमी टेनिस के सीधे प्रसारण से जुड़े हैं वे भी अब इन नामों को भली भांति जानते हैं, चाहे वैष्णवी हो अथवा ऋतुजा हो। जील देसाई का मुकाबला भी उन्होंने देखा है, अंकिता रैना का मुकाबला भी उन्होंने देखा है। जाहिर सी बात है आज ये नामचीन सितारे, ये टेनिस के बड़े सितारे अपना सबसे बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे। टॉप सीट गुजरात के लिए आज अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होगी, अपने आप को साबित करने का अवसर भी होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र निश्चित तौर पर टॉप सीट को परास्त करके बतौर सेकंड सीट बड़ा काम करने वाला होगा। बहरहाल मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में अंकिता भामरे। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. It's going to be a very interesting day for tennis today. We have two Fed Cup players competing against each other later on in the second singles match in the finals here at the 36th National Games in Gujarat. It's the women teams event final between Maharashtra and Gujarat. Gujarat obviously having Ankita Raina, India's #1 player. Zeel Desai, who's done really well in juniors in 5 years. She's 23 years old, playing a lot of ITF women's tournaments around the world. On the other hand, we have Vaishnavi Atkar, a 17-year-old junior, who's also going to be playing a lot of women's matches. We see them now warming up and practicing on court. And the second singles match against Ankita Raina will be Rituja Bhosle. We saw her play some amazing tennis yesterday while she defeated Sai Smita from Tamil Nadu. ये हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वैष्णवी आडकर। महज 17 वर्षीय इस खिलाड़ी ने खासी संभावनाएं जताई हैं। नेशनल रैंकिंग इनकी 45 है, जूनियर रैंकिंग इनकी बहुत बढ़िया रही है। अब सीनियर लेवल पर परफॉर्म कर रही हैं। अक्टूबर 2020 में आपने जूनियर फ्रेंच ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री की और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई, यानी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उनके पास खासा है। 14 अक्टूबर 2004 को पुणे में जन्मे इस खिलाड़ी ने कल के मुकाबले में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया था। इनकी जो सबसे पसंदीदा सरफेस है वो हार्ड कोर्ट है और इनके जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो इनके दादा हैं। अपने दादा को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे उनको मोटिवेशन भी मिलता है। इसके अलावा इनका जो एक और अच्छा शौक़ है वो अच्छा खान पान ये पसंद करती हैं। खाने पीने की शौकीन हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात 17 वर्ष की उम्र में देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा था वैष्णवी की। दूसरी तरफ जील देसाई हैं। जील देसाई एक ऐसा नाम है जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानती हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। Zeel is currently ranked 570 in the world WTA rankings. She has recently, earlier in this year, played 2 singles finals in the ITF $15,000 tournament. We see Vaishnavi and Zeel warming it up for their first singles finals in the 36th National Games here in Gujarat this morning. मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं, जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पीठ आपको दिख रही है वो हैं वैष्णवी। जिस समय सामने है आपके फ्रंट वो हैं जील देसाई। जील देसाई जिनकी नेशनल रैंकिंग 5 है, वर्ल्ड रैंकिंग अभी बताई थी, तो जाहिर सी बात है जील के बारे में और बेहतर जानकारी देंगी हमारे अंकिता। बताएं अंकिता। I was speaking to the players, earlier this morning, and it's going to be interesting to watch and see how they're able to combat the situation. They said the courts were slightly faster, the balls do fly, and there is a light breeze. The good part here, however, is the temperature is going to be slightly cooler with the matches starting, early at 9:30. We saw a really long, almost 3-hour battle that Vaishnavi played yesterday, so it depends on how well she was able to recover
and recoup for this match here today. One has to be very fit, on top of their game every single day to take out these matches. Vaishnavi Atkar on your screens right now. वैष्णवी ने इस प्रतियोगिता में अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, ये एक अच्छी बात जाती है क्योंकि मैच प्रैक्टिस आपके हिस्से में जितनी ज़्यादा आएगी, हालांकि कल थोड़ा सा उन्होंने सफ़र किया था, कल थोड़ी समस्या गई थी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उन्होंने लिया था, लेकिन 2 मुकाबले, पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो उन्होंने खेला था सिंगल्स में, उसमें उन्होंने काव्या किरवर को परास्त किया था 6-2 6-2 से। सेमीफाइनल में वैष्णवी ने लक्ष्मी प्रभा को थोड़े से संघर्ष के बाद परास्त किया था 6-1 4-6 और 6-4 से। गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, फाइनल मुकाबला महिला टीम चैंपियनशिप, पहला टाइटल सामने आएगा, पहला मेडल सामने आएगा टेनिस प्रतियोगिता से। अहमदाबाद जो गुजरात का हृदय कहलाता है, आज सबसे खूबसूरत जगह पर हम मौजूद हैं डीडी स्पोर्ट्स के सीधे प्रसारण के लिए, साबरमती रिवर फ्रंट। यहाँ खूबसूरत टेनिस सेंटर है और टेनिस सेंटर के सेंटर कोर्ट पर एक दिलचस्प मुकाबले को लेकर आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आकर्षक टेनिस देखने को मिलेगा क्योंकि नाम बड़े हैं और फाइनल मुकाबला है तो जाहिर सी बात है फाइनल को फाइनल की तरह खेला जाएगा और फाइनल का आनंद आपको उसी तरीके से मिलेगा कि अंकिता मेरी बात से सहमत होंगी। I think it's going to be an interesting matchup between these two players. Contrasting game styles, depends on who's mentally fit, mentally ready to grind it out, especially in the first match, because that may be the match that sets the momentum going forward. We are expecting a very tight, contested battle between Ankita Raina and Rituja Bhosle. They have played each other a lot in 2017, 2018, with probably winning 2 matches apart. They played for 3 to 4 times, but they haven't played each other before in the last 2 years. So it'll be interesting to watch how that one goes. But talking about the first singles here, Vaishnavi and Zeel, they haven't played each other, so I'm sure they come up with strategies that they would want to implement, and it will be exciting to see how the match shapes up. बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे सारे दर्शक भी उत्साहित होंगे, जागरूक होंगे, जिज्ञासु होंगे इस मुकाबले को लेकर। गुजरात मेज़बान है, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है। आज उनकी ही टीम चैंपियनशिप के फाइनल में खेल रही है महाराष्ट्र के खिलाफ। दोनों ही टीमें बड़ी हैं, बड़े नाम हैं। बहुत जल्दी से इन टीमों का सफ़र बता देते हैं। गुजरात क्वार्टर फाइनल में तेलंगाना को परास्त किया 2-0 से, कर्नाटक को सेमीफाइनल में हराया 2-0 से, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो बिल्कुल इसी स्कोर से क्वार्टर फाइनल में दिल्ली को हराया 2-0 से, सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हराया 2-0 से। और अब ये दिलचस्प मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। आमने सामने है पहले सिंगल्स में वैष्णवी अटकर और झील देसाई, एक पुणे से, दूसरी अहमदाबाद से, एक महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्विस इस पहले सिंगल्स की पहली सर्विस झील देसाई के जरिए। Love in the opening game of the first match in this singles finals between Gujarat and Maharashtra. Vaishnavi, we've seen her stroke really well, very comfortable with her ground strokes. We saw that in her match yesterday, in an almost 3-hour long match that she played against Lakshmi Prabha.
40-15 पर सर्विस कर रहे हैं इस समय झील देसाई। Oh, fantastic back and cross court there by Vaishnavi Atkar. Really moving Zeel out of her comfort zone, setting up that point very beautifully. Nice recovery in the opening game. Shows what we have in store today. Seems to be like an evenly contested match. Both players keeping the ball really low, going for their shots. Beautiful serve out wide, catching Vaishnavi off guard. Second serves could really put the player in a tough situation, because you got to have a lot of spin on that second serve if you want to trouble your opponent. And easy serve is going to be something Vaishnavi is going to really look forward to. We saw her really pouncing on those serves yesterday, and I think she's going to be doing the same today. A tough first game hold there by Zeel Desai, getting a 1-love lead in the opening set. We are here in Ahmedabad for the finals of the women's team event at the 36th National Games. इस तरीके से पहली सर्विस होल्ड की तो अंक हासिल किया, पहला गेम हासिल किया झील देसाई ने। थोड़ा संघर्ष जरूर देखने को मिला, फाइनली होल्ड करने में कामयाब रहे, और ये आवश्यकता हुआ करती है। किसी भी मुकाबले की शुरुआत पूरे खेल को प्रभावित किया करती है। यहाँ झील देसाई को चुनौती ज़रूर दी। एक समय ऐसा भी आया है जब मुश्किलें थीं झील देसाई के हिस्से में। वैष्णवी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। एक बेहतरीन फॉरेन डाउन द लाइन जो उनका स्ट्रोक था, वो इस गेम का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक था। ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं पहले गेम की, और अब सर्विस रहेगी वैष्णवी की। उनके लिए भी अवसर रहेगा। वैष्णवी होनहार खिलाड़ी हैं, महज 17 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कल के मुकाबले में अपनी प्रतिभा का परिचय तमाम खेल प्रेमियों को दिया था। आज बारी है एक बार फिर उसे प्रकट करने की। वैष्णवी की सर्विस। कोशिश अच्छी, लेकिन
कामयाबी परख नहीं, ड्रॉप खेलने की कोशिश की थी बैकहैंड के जरिए। शुरुआत दरअसल थोड़ी सी टफ रहा करती है, यहाँ खिलाड़ियों को प्रयोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए। बेसलाइन डीप रिटर्न करने की कोशिश, डबल एंडेड बैकहैंड स्ट्रोक, लेकिन लाइन के बाहर। जील को भी आसानी नहीं थी सर्विस होल्ड करने में, यही कुछ हिस्से में आ रहा है वैष्णवी के। 2 लगातार अंक गंवाए हैं, लव 30। एक बार फिर थोड़ा सा कैजुअल स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस नहीं, रिदम नहीं, थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। हालांकि आज के तेज तर्राट युग में समय की सबसे ज़्यादा कमी रहा करती है खेल के या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में। 3 ब्रेक पॉइंट हैं समय जील देसाई के पास, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है जील के हिस्से में। ये सर्विस, A good first serve there by Vaishnavi. I think she'll have to be very strong here on court. She can't afford to have too many unforced errors, spraying the ball all over. She's not going to get the opportunities multiple times like she got yesterday. She's playing a far more experienced player who's going to fight it out, who's going to be keeping those extra ball in play, and she'll have to be very careful, making full use of every opportunity she gets. She cannot let them go easily. बड़ा मुश्किल कोण उन्होंने दिया डबल एंडेड बैकहैंड स्ट्रोक के जरिए, जहां से बाहर खेलने पर मजबूर किया। तो 2 ब्रेक पॉइंट बचाए हैं, अभी भी एक मुश्किल सामने है, उससे पार पाना होगा वैष्णवी को, इस युवा खिलाड़ी को। और फाइनली तीसरा ब्रेक पॉइंट भी उन्होंने बचाया, ड्यूस की स्थिति हासिल की। ये इस खिलाड़ी की क्षमता को उजागर करता है। 3 ब्रेक पॉइंट विपक्षी के हिस्से में थे, बावजूद इसके इस 17 वर्षीय खिलाड़ी ने तीनों ब्रेक पॉइंट बचाए हैं। ये इनकी कामयाबी है, और ये कॉन्फिडेंस उनको आगे के खेल में और बेहतर करेगा। We see a very similar pattern of play, just like the first game. She lost a couple of points early on. Vaishnavi got to deuce but couldn't break in the opening game. She seems to have the advantage now to hold serve. A good first serve will definitely be the key here. Well, a backhand unforced error there by Zeel, giving Vaishnavi the first chance to hold serves, making it 1-all in the opening set of the first singles finals. Both the players have really, sweated out, had 2 tough games, held serves, had the opportunities. Who's able to raise the level of their tennis here on is what's going to be interesting to watch.
Double fault there by Zeel, not putting in much spin and pace on that serve. Serve has always been, something that one has to really work on and improve if you want to go up high on the ladder, especially playing the international circuit. झील देसाई नाखुश हैं, होना भी चाहिए। एक सीनियर खिलाड़ी, 5 साल सीनियर हैं वैष्णवी से। 99 की उनकी पैदाइश है, क्योंकि वैष्णवी 2004 में जन्मी है। बाहर खेलिए और एक और अनपोज्ड एरर देखने को मिला झील देसाई की तरफ से। मैं दोनों का अगर कंपैरिजन करूं तो नेशनल रैंकिंग 5 है झील की, नेशनल रैंकिंग 45 है वैष्णवी की। एक 23 वर्षीय हैं, दूसरा 17 वर्षीय है, यानी वैष्णवी, तो दोनों में अंतर है। आउट होना चाहिए। Spray of unforced errors by both the players. Both don't seem to be getting enough rhythm to be able to hit a lot of balls consistently inside the court. That is what's going to give them the edge over the other. What a great setup! An extremely good inside-out forehand returner serve gives Vaishnavi the first break here in the third game, giving her a 2-1 lead in the opening set. तीसरा गेम खत्म हुआ है, लेकिन अभी तक का सबसे अच्छा सर्विस रिटर्न आपको देखने को मिला। ये इस खिलाड़ी की काबिलियत को दर्शाता है। छोटी आयु लेकिन बड़ी संभावनाएं इन्होंने उत्पन्न की हैं पिछला कुछ समय। हालांकि थोड़ा सा संघर्ष भी किया है। कल का ही दिन संघर्ष भरा रहा था, जो फिजिकली थोड़ा सा अनफिट हुई थी। बावजूद इसके मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद फाइनली उन्होंने मैच को जीता, अपनी टीम को आगे पहुंचाया। लक्ष्मी प्रभा के खिलाफ मुश्किलों में थी, लेकिन जज्बा आपका बेहतर था। यह है झील देसाई। वैष्णवी एक बार फिर। She has a taped abdomen, Prashant, so it will be interesting to watch how well is she able to serve. We did see her serve some really big serves yesterday in the opening set, although the first serve percentage did drop considerably for both the players yesterday, but today serves and returns could be one of the key factors of getting a good advantage in the points. Since both of them are hitting the ball well, clean, keeping it low, good first serve can help you shorten the points, getting you the much needed opportunities to finish it off and make it easier. Well, it's the start of the drop shots, something that Vaishnavi seems to do very beautifully and confidently. Gets her quite a few points, especially when the rallies get long and the going gets tough. This is what Vaishnavi enjoys doing, coming up in hitting that ball on the rise, from waist to shoulder level. She's quite comfortable in putting those balls away, and this is what she looks to do, and a good percentage of serves will definitely help her.
There seems to be some sort of confusion there between the players as far as the score is concerned. It was actually the previous point that Vaishnavi thought that the serve was right. It was indeed called fault by the umpire. So it's 40-15. Well, these are points when one has to seize the opportunity. This was a normal rally point. We expected her to put it away, putting Zeal in a tight spot, but an unforced error on the forehand. Not enough in position to set up and hit the ball properly. She not only reached it but managed to put it away as well. Read that ball quite beautifully. Zeal getting it back to deuce. It's home situation and familiar surroundings and weather for Zeal, who's born and brought up in Ahmedabad. So she's used to weather conditions, although she's been playing all around the world. Playing at home is always very special. Two return errors there by Zeal, giving Vaishnavi a chance to hold serves and take a 3-1 lead in the opening set. We are at a beautiful location here in Ahmedabad at the Sabarmati riverfront, watching the singles finals, women's team event finals between Gujarat and Maharashtra. Both the players have to fight the heat, the conditions. हालांकि अभी मौसम उतना गर्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. फिलहाल पांचवा गेम सर्विस के लिए जील देसाई तैयार. पोस्ट एरर, कंट्रोल नहीं. डबल हैंडेड बैक हैंड स्ट्रोक. अपनी सर्विस पर पहला अंक गंवाना कोई भी खिलाड़ी पसंद नहीं करेगा. जील देसाई हालांकि इस प्रतियोगिता में केवल एक मुकाबला खेला था क्वार्टर फाइनल में. एक और बढ़िया सर्विस इस बार जील की तरफ से. फर्स्ट सर्व, जैसे कि अंकिता ने भी जिक्र किया, महत्वपूर्ण रहा करती है. पहली सर्विस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाया करता है, मन माफिक आप सर्विस कर पाते हैं. It did look like Vaishnavi would have finished off the point when she was approaching the net, but it's too haste in her decision, not a good setup. You've got to stay really low to be able to put that ball away.
थोड़ा सा मिस कर गए, हालांकि अच्छी पोजीशन हासिल की थी। डाउन द लाइन खेलने का प्रयास थोड़ा सा बाहर गया। एफर्ट अच्छा था लेकिन रिजल्ट मनमाफिक नहीं रहा। Good first serve, and this is what I've been talking about. It really does give you an advantage, especially if you want the points to be shorter and you want to be in a comfortable position to dictate the rally. First serve is the key to getting that to happen, and Zee will really need to up her game if she wants to get back that advantage. Quite a comfortable hold here, and she'll have to be better prepared to tackle that pace, because Vaishnavi likes hitting the ball hard, even though they aren't very angular at times, and she does crack under pressure. But Zeel will have to really push her back if she wants her to, be unable to hit those shots with a lot of pace and depth. नमिता बाल जो कोच हैं महाराष्ट्र टीम की, और ये हैं झील देसाई जो पहला सिंगल्स खेल रही हैं महिला टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर स्थित सेंटर कोर्ट से। खूबसूरत टेनिस सेंटर, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 कोर्ट बनाए गए हैं। ये है सेंटर कोर्ट। पहला अंक अपनी सर्विस पर हासिल किया वैष्णवी ने। अभी तक सर्विस होल्ड हुई है, ब्रेक अभी तक नहीं मिला है, और ये एक अच्छी बात है खेल के लिहाज से कि दोनों ही खिलाड़ी धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में आ रही हैं। ब्रेक हासिल करना एक्स्ट्रा आपकी काबिलियत को दर्शाता है, लेकिन सबसे पहले सर्विस होल्ड करना ये आपको आपके कंफर्ट जोन में पहुंचाया करता है। पोस्ट एरर, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रही, बेस लाइन से बाहर गया बैकहैंड स्ट्रोक। झील देसाई को केवल एक मुकाबला खेलने को मिला है क्वार्टर फाइनल में तेलंगाना के खिलाफ, तो उनके पास केवल एक मैच की प्रैक्टिस का अनुभव है, जबकि वैष्णवी ने 2 मुकाबले खेले हैं। बहुत बढ़िया डीप टॉस कोर्ट रिटर्न। यहाँ थोड़ा सा अचंभित कर दिया करता है खिलाड़ी जब डीप रिटर्न किया करता है बिल्कुल बेस लाइन पर। आमतौर पर अटेंड करने वाला या रिसीव करने वाला खिलाड़ी बाहर फील करता है, लेकिन वो इन होता है तो उसे जल्दबाजी में अपने स्ट्रोक को खेलना होता है। 30-15, 30-15। Great point set up there by Vaishnavi, but couldn't manage to finish it in the end. A miss hit there, not helping her cause. Wasted opportunity, I think. ये सेकंड टाइम हुआ है, इससे पहले एक बार और नेट पर वो आई थी, बाहर खेल गई थी। यहाँ थोड़ा बैड लक रहा, पिछली बार रन पहुंच रहा था। Excellent backhand cross court. A good hustle there by Vaishnavi.
Chance here to hold serves and to maintain that lead. Not the time for a double fault. She did try to go in for her first serve this time. We haven't seen her do that, but couldn't manage to get the ball in the court. It is these important points where a good server really gets an advantage. Exactly what I was talking about in the previous point. She was completely in control, making sure she directed the balls in different angles, keeping Zeal on the run and on the defense, not giving her an opportunity to get back into that point. Well, two good first serves, and Vaishnavi manages to hold serve. 4-2 lead. If she continues this momentum and keeps it going, she can really put Zeal in a tough, tight situation and difficult for her to get through. She's already finding it difficult to manage Vaishnavi's pace, and she'll have to change strategies here and do something differently to put her opponent in a tough situation. बेहतर रॉन्ग फुट पर लिया अपोनेंट, अपने बेहतरीन क्रॉस कोर्ट के जरिए ओपनिंग हासिल की और फाइनली फिनिश किया नेट पर आकर। दो बार गलती उनसे हुई है नेट पर, लेकिन अब संभल कर। इससे पिछले गेम में भी उन्होंने थोड़ा नेट से परहेज रखा, दूर से शॉट खेला और अंक हासिल किया था। लव 15। आसान नहीं था, हालांकि सेटअप किया था, शुरू से स्ट्रगल के लिए मजबूर किया था वैष्णवी को। झील का बेहतर स्ट्रोक प्ले और फाइनली अंक भी बटोरा, लेकिन आसान नहीं होगा वैष्णवी के खिलाफ झील का ये मुकाबला। A good out wide serve on Vaishnavi's forehand, helping her get an easy point. Both the players have similar style of play. It just goes to show who gets the advantage and the opportunity to dictate the points early on. Trying to go for too much there from the center. Vaishnavi spraying the ball out. At times one needs to be calm, cool, and just play it in the corners. Play one extra shot. Wait for that opportunity. Not be in a hurry to finish off the point. Very close to the line. Tough call there. The umpire overruling the linesman and calling the ball in.
Great attempt by Zeel did pay off, giving her an opportunity to hold serves here. चेयर अंपायर कौशिक दास, हालांकि लाइन्समैन ने जो कॉल किया था आउट का उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फाइनली पॉइंट दिया जील के हिस्से में। जील ने सर्विस होल्ड की, स्कोर है 3-4, 4-3 से आगे हैं इस समय वैष्णवी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और ये है जील देसाई। आज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मेज़बान स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, टॉप सीड अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। टॉप सीड है गुजरात, सेकंड सीड है महाराष्ट्र। The good part about team championships are that you have your coach sitting, captain sitting with you at the bench. It's easy to discuss strategies, to change them when things are not working out. You don't really see much of it since tennis is such an individual sport, and most of the players travel on their own on the tour circuit because it gets extremely difficult financially, especially for the Indian players to be traveling with a team. This is where team championships do give you a bit of a relief, especially in analyzing the opponents and to understand what could be done better. बिल्कुल सही बात आपने कही। एक फैमिली बनकर टीम खेला करती है और फैमिली के साथ सफ़र करना, कोई खेल खेलना, कोई मुकाबला खेलना। कोशिश अच्छी थी पास के लिए, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई अपने एफर्ट को पॉइंट्स में। एक अच्छा ड्रॉप, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। पास के लिए ट्राई किया वैष्णवी ने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जील के हिस्से में पॉइंट आया। अंकिता ने बड़ी अच्छी बात कही, टीम चैंपियनशिप में सपोर्ट मिला करता है खिलाड़ियों को। इंडिविजुअल जब इवेंट खेला करते हैं वहाँ उतना आश्वस्त नहीं रहा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। Great inside in return by Vaishnavi. She really enjoys playing from that side of the court. She's very good with her trunk rotations and follows it up very beautifully. From both sides, it's not many a times that we get to see somebody doing that very comfortably, and it does pay off a lot of times. बैक एंड डाउन द लाइन, इस बार ट्राई अच्छा था, कोशिश अच्छी थी, लेकिन लैंड सही जगह नहीं किया गेंद ने और फाइनली अंक विपक्षी के हिस्से में गया। वैष्णवी 30-15 और ये सर्विस होल्ड करते हैं तो बेहतर स्थिति हासिल करेंगे इस सेट में। 5-3 की बढ़त अच्छी मानी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। तीसरा डबल फॉल्ट है दरअसल वैष्णवी का इस सेट में। थोड़ा इनसे दूरी बनानी होगी, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल समय होता है। A very important 8th game for both players, and they both know it. So this is the time to raise your level, to hit those first serves in. This is what a good first serve can help you do. A very well thought and executed point by Vaishnavi, following it up with a good backhand volley winner. She has the capacity to do and play such points. I mean, she just has to do it more often. Another one here, giving her the much needed hold, giving her a 5-3 lead. This is Prashant, this is what I spoke about earlier as well.
high percentage first serves in, getting that opportunity, playing one extra ball, not hurrying it up. Sometimes just playing the easy shot, playing it well and hitting it in the corners gives you the added advantage. नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली सर्व अगर आपकी परफेक्ट गिरती है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाया करती हैं, खासतौर से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है। और यहाँ जिसका हम जिक्र कर रहे थे जील के हिस्से में, वो नहीं है। जील स्ट्रगल कर रही हैं फर्स्ट सर्व को लेकर। बढ़िया सेकंड डीप एंगलिंग सर्विस। थोड़ी सी मुश्किल थी शुरुआती सर्विस में, उसको खत्म किया 15-0। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक प्ले। Fantastic return of serve there by Vaishnavi, helping her set up the point. When she has Zeel on the run, it's always easier for her to dictate and win points. The points seem to be much shorter with her crisp and clean strokes. फर्स्ट सर्व जिसकी अंकिता आप बात कर रही थी, ये कॉन्फिडेंस दिया करता है। पहली सर्विस अगर आपकी सही जगह पर, सही ठिकाने पर पड़े तो रिजल्ट ऐसे आया करता है। सर्विस पॉइंट अर्जित किया 30-15। That return just managed to touch the line. Zeel one thinking that might just go out, wasn't well prepared to counter attack on that stroke. Well executed serve, but couldn't capitalize on that ball. Got stuck. A great return by Vaishnavi, right into the body. First set point for Vaishnavi, representing Maharashtra. Going for too much too soon, Vaishnavi. Sometimes it's important to just keep the ball in, start the point, get into a rhythm, and then try to attack. It definitely helps get a rhythm going, especially at crucial occasions. A good body serve, jamming the opponent. Back to deuce. Great return serve by Vaishnavi, setting up the point beautifully.
wickets in this game by Vaishnavi. Don't know whether it's nerves or unable to read the serve correctly. Chance here for Zeel to hold serves. अनफोर्स्ड एरर, ओपनिंग हासिल की थी, बैटर पोजीशन हासिल की थी, फॉर एंड इनसाइड आउट, थोड़ा सा बाहर गया और फाइनली जील को मिला एक और होल्ड। कुल मिलाकर पोजीशन हुई 4-5, 5-4 से लीड कर रहे हैं। एक होल्ड और इस सेट को अपने कब्जे में ले लेंगे वैष्णवी। वैष्णवी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है, कई अच्छे शॉट्स देखने को मिले। बैकहैंड क्रॉस कोर्ट, खासतौर से डीप स्ट्रोक जो बेसलाइन पर लैंड किया करते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहा करते हैं। और जील के खिलाफ ये काफ़ी किया है। ड्रॉप शॉट अगर उनकी ताकत है तो उनकी खूबसूरती है बेसलाइन स्ट्रोक्स। I think Vaishnavi seems to have a lot of potential. I mean, she's a good hitter of the ball, likes to take it early, great rotation on both sides, good coiling. It really helps her get those angles. But it does, in my opinion, I feel like there's some lack of experience when it comes to playing, shots where she needs to maybe change the pace a bit, slow it down, just keep it in the corners to win the point. Every ball doesn't have to be hit, at 100% pace. There are times when you can win the point with a nice placement return as well. I think that's a department that she really needs to work on, just to make things easier for herself with a well-planned shot from the baseline. बिल्कुल सही बात आपने कही। छोटी हैं, अभी 17 वर्षीय हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा वो काम करके दिखाएंगी, जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तमाम खेल प्रेमी उम्मीद करते हैं। कल भी एक जो मुकाबला उन्होंने खेला था लक्ष्मी प्रभा के खिलाफ, 6-1 से पहला सेट जीतने के बाद दूसरे सेट में स्ट्रगल किया था। लेकिन वही गलतियां थीं, हर गेंद पर 100% नहीं मिला करता है। जैसा अंकिता ने कहा, थोड़ा सा समय लें। पहला अंक गंवाया है वैष्णवी ने अपने सर्विस पर, होल्ड करना होगा, सेट कब्जे में आ जाएगा। What a great down the line. Did not expect it from anywhere. Very, very well as executed. Very close to the line. समझा जा सकता है बैक एंड क्रॉस कोर्ट के लिए जा रही थी, आपको डाउन द मिडल लगभग आपको मिला, तो जाहिर सी बात है आपको रॉन्ग फुट पर लिया वैष्णवी ने अपने इस बैक एंड डबल एंडेड स्ट्रोक के जरिए। Not the kind of stroke you would want at this situation. You want to get into a comfortable lead. You put that serve in. You got the ball where you wanted. She's always trying to go for the lines, and it doesn't work sometimes. थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद ये खिलाड़ी अपने आप को साबित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 30 ऑल। She did miss out on a set point in the previous game while returning. Here's a chance for her to get those serves in. Well thought,
but couldn't execute it till the very end. It's nice to see a women's, an Indian junior player coming up to the net quite often, trying to finish off the points. If she can develop this game style a lot more, it will be very beneficial to her in the long run. She does have those big shots. It's just a matter of getting your placement right, not over trying at times, being calm and composed in certain situations, especially when it's a 30 all or deuce on the important points. Another chance to hold serves. Set point for Vaishnavi. Double fault there by Vaishnavi. Body weight transfer. Going backwards in this serve, resulting in the ball ending up in the net. Another weak serve there. And Zeel Desai finishing off at the return this time. Break point and a chance to make it even at 5 all for Zeel. Very close call there by the baseline umpire. ये महत्वपूर्ण गेम है, यहाँ से सेट डिसाइड हो सकता है. ज़ील इस गेम को जीतती हैं, ब्रेक हासिल करती हैं तो बराबरी हासिल करेंगी. Good outright first serve by Vaishnavi. Another set point. I think she's had quite a few now. It's a good first serve is definitely going to help her get that confidence to finish off the point. That is the need of the hour. The time when you need to just place the ball at your favorite angle, go for more percentage rather than speed, try and get the advantage in your favor. This is where experience counts. सर्व मुश्किलें दे रही है वैष्णवी को. बुरी स्थिति नहीं हो सकती. एक और डबल फॉल्ट. इस सेट का 5वां डबल फॉल्ट है वैष्णवी की तरफ से और ये जताता है कि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हैं. कंट्रोल कम हो जाया करता है जब आप अतिरिक्त प्रयास किया करते हैं. नियंत्रण की कहीं ज़्यादा आवश्यकता हुआ करती है. ब्रेक पॉइंट है ज़ील के हिस्से में. This is the kind of serve that was required, in the previous time. Exactly what I was talking about. A good first serve does give you the advantage, but players seem to be faltering a lot more in this department, especially as the match progresses deep into the sets. A good toss and leg drive is equally important. Your body weight needs to get inside behind the ball. Most of the players start falling backwards, and that's where
the serves start falling very short or in the net. We've seen a lot of them happening yesterday with both the young players in the first round marathon match that Vaishnavi won against Lakshmi. और फाइनली इस सेट को जीता 6-4 से वैष्णवी अटकर ने। तो सिंगल्स, पहला सिंगल्स 36वें राष्ट्रीय खेलों की टेनिस प्रतियोगिता का महिला टीम चैंपियनशिप का पहला सिंगल्स रहा है, पहले सिंगल्स का पहला सेट रहा है। महाराष्ट्र के पक्ष में झील देसाई अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी को परास्त किया 6-4 से। महज 17 वर्षीय वैष्णवी अटकर ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, थोड़ा सा स्ट्रगल किया सर्विस को लेकर, लेकिन ये दोनों तरफ से देखने को मिला था। जीत उस खिलाड़ी की हुई जिसने कंट्रोल ज्यादा किया, ज्यादा अच्छे स्ट्रोक्स दिखाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिसके पास ज्यादा था। नाम है वैष्णवी। फिलहाल झील आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बेहतर करना होगा बेस्ट ऑफ 3 के इस मुकाबले में। It's been a tightly contested first set with most of the games going to deuces, not once or twice, but many times. Even in the first two games of the of this opening set, we saw both the players struggling a lot to get their rhythm going, with a lot of deuces, chances, and missed opportunities. Uh, both the players struggling to break and hold serves. These are some of the highlights of the first set that Vaishnavi Atkar took for Team Maharashtra. Some very good stroke play by both players from the baseline. Vaishnavi coming up to the net more often, especially when she gets an advantage, not holding back and staying away. Gives her the edge and much needed advantage in this match here, in the finals of the 36th National Games here in Ahmedabad, Gujarat. दूसरा सेट पहली सर्विस झील देसाई के जरिए। पहला गेम गंवाया है, पहला सेट गंवाया है 4-6 से। बहुत बढ़िया क्रॉस कोर्ट स्ट्रोक देखने को मिला, हालांकि एंगल बहुत मुश्किल था, उसके बावजूद बढ़िया रिटर्न और फाइनली अंक जुटाया। डाउन द लाइन खेलने की कोशिश नेट में उलझी झील देसाई की। लव 15। Picked the right corner of the court there, Zeel Desai. Very, very big forehand cross court. Getting it right this time. She definitely has the strokes. She just needs to get in a more comfortable position to attack and dictate the points. Great stroke, following it up with a double fault. It's the first game of the second set. Zeel serving. A good lead can definitely help get her confidence level back up, and I think that is exactly what she needs to be trying and aiming for, in my opinion. आपका ओपिनियन, आपकी सोच, आपका ऑब्जर्वेशन निश्चित तौर पर बिल्कुल सारगर्भित रहा करता है, और वही देखने को मिल रहा है। झील
मुश्किलों में हैं। 2 ब्रेक पॉइंट हैं वैष्णवी के हिस्से में। 15-40 जील सर्विस कर रही हैं। जरा सा बाहर रहा। खुश नहीं है वैष्णवी। बहुत अच्छी सर्विस। फर्स्ट सर्व अगर आपकी सही जगह पर लैंड होती है, सही जगह पर पिच होती है, तो रिजल्ट तो आपके बढ़िया आने ही हैं। बहुत खूबसूरत। पास खेलने की कोशिश कर रही थी लेकिन रीच बनाई, बाहर खेल पाई। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था जील के लिए। थोड़ा डिफेंसिव मोड रहा दोनों ही खिलाड़ियों का। संभल कर खेल रही थी, लेकिन संभल कर खेलने में कई बार नुकसान भी हो जाया करता है। वो जील के हिस्से में आया। I think that was a very interesting and mature play by Vaishnavi. She really changed the pace as soon as the strings broke in the middle of the point, and I think her effort really paid off in the end. A very well thought point played by Vaishnavi, giving her a break in the second set of the opening match here in the women's singles final team event championship. Um, I think that was nice thinking there by Vaishnavi. What do you say, Prashant? I think she does show glimpses of maturity, of great stroke play. I think it's just a matter of doing it well consistently, point after point, and that's going to really help her go far. She has the game, she has some good strokes, just keeping placement in mind at times, and a good, just developing a good serve, first and second both will really help her raise the level of her game. वाकई। और लास्ट जो गेम रहा था, यानी इस सेट का पहला गेम, उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई थी। वो जो थिंकिंग आप बता रहे हैं, वो सोच समझ कर खेलने की उनकी क्षमता, वो दिखाई दी। थोड़ा सा डिफेंसिव मोड ज़रूर लगा, लेकिन वे जानती थी ये पॉइंट वो है जिसके सहारे मैं ब्रेक हासिल कर सकती हूँ। सेट का पहला गेम अगर ब्रेक के तौर पर आपके हिस्से में आए तो रास्ते बहुत आसान होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है। सीधे अर्थों में मोमेंटम आपके पास होता है। Two big first serves by Vaishnavi, giving her 2 easy points. Just what we spoke about, and she has to continue this style of play throughout. It's time for Zeel to do something differently. If she wants to get out of this tough situation, get back into the match, make it evenly contested, she probably either has to start taking the balls a bit early, stand slightly back, get enough time to play her strokes. She hasn't been able to read those drop shots at all today. She did manage to on few occasions, but it hasn't helped her in the match so far. और इस बीच पहला लव गेम देखने को मिला है। Zeel will really have to up her defenses, stand slightly back, get some more time so that she's able to play her strokes, play them deeper, get the advantage back in her favor. That's the only way she'll get the opportunity to dictate the points the way she likes to play them. 0-2 से पीछे हैं जील देसाई। आज बड़ी चुनौती दे रहे हैं वैष्णवी उनको।
क्या जबरदस्त फॉरइन क्रॉस कोच, बिल्कुल निशब्द कर दिया है, निरुत्तर कर दिया है जील को वैष्णवी ने अपने स्ट्रोक प्ले से। पहली सर्विस ब्रेक हुई, दूसरा लव गेम सर्विस होल्ड की, और तीसरे गेम में पहला पॉइंट अर्जित किया है वैष्णवी अटकर ने। इससे बेहतर स्ट्रोक प्ले देखने को नहीं मिल सकता है। इस अनुभवी खिलाड़ी को जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, निरुत्तर कर दिया है, सरेंडर पर मजबूर किया है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। दोनों फ्लैंक पर दौड़ने पर मजबूर किया, फाइनली विनर खेला। इतने डिस्टेंस के साथ बॉल गई थी। अंकिता ज्यादा बेहतर बताएंगी इस स्ट्रोक प्ले के बारे में। Prashant, I was speaking to the players early in the morning, and they did say that the court seems to be like, slightly tricky because it's playing very fast. The balls are flying, and there's a light breeze, here at the stadium thanks to the river. So I think it's definitely going to support the player who hits the ball hard and hard and fast. So that is what Vaishnavi seems to be doing very well here today. And I think it's playing to her advantage, as we can see. ऐसा भी होता है। फिलहाल 15-40, दो ब्रेक पॉइंट जरूरत नहीं पड़ी, लगातार दूसरा ब्रेक हासिल किया। 3-0 अप हुए वैष्णवी। 6-4 फर्स्ट सेट ऑलरेडी जीत चुकी हैं, दूसरे सेट में 3-0 अप। ये बड़ा कंफर्ट जोन हासिल किया है इस मुकाबले में। 3-0 अप होना सेकंड सेट में, ये बड़ी बढ़त कहलाएगी अंकिता। It's nice to see that she didn't repeat the same mistakes as yesterday. We saw her win a comfortable first set. She got slightly casual starting off in the second. Here she's been very strong, very focused, stayed to her strengths. And I think that's what's helped Vaishnavi get this much needed lead in the second, and keeping her confidence high up in this match against Zeel. If Zeel wants to get out of this situation, she'll have to play things differently. The same strategy won't help at all. To see a fantastic stroke play there by Vaishnavi. Constantly putting Zeel on the back foot. She's on the defense, running from one corner to the other. She'll have to get more into placements, start making Vaishnavi run a lot more, get her out of her comfort zone, change the pace a bit, because that definitely seemed to be working against her in the match yesterday. She likes the pace, she likes the length and the stroke, and that's what she's comfortable returning. So if Zeel wants to make a good match out of it and get herself out of this tough situation, she'll have to mix things up, change the pace a bit, work on a bit of placement to make Vaishnavi uncomfortable. फर्स्ट सर्व कितनी इंप्रेसिव हुआ करती है अगर परफेक्ट जाए। सर्विस पॉइंट अर्जित किया। अब अगर अपने कॉन्फिडेंस की बात की जाए, आत्मविश्वास अब उनका 7वें आसमान पर होगा। पहला सेट जीता 6-4 से, दूसरे सेट में 3-0 अप। जबरदस्त स्ट्रोक प्ले एक बार फिर, और फाइनली बैक हैंड डाउन द लाइन के जरिए उन्होंने, डाउन द मिडिल के जरिए उन्होंने रिटर्न बाहर खेलने पर मजबूर किया। 30 लाओ। महज 17 साल के हैं वैष्णवी अडकर। ये बैटर था, एक अच्छा सर्विस रिटर्न भी बड़ा काम किया करता है। रैकेट गेम्स में वैसे भी कहा जाता है सर्विस जितनी महत्वपूर्ण रहती है, रिसीविंग
कहीं और ज्यादा महत्वपूर्ण रहा करती है। पांच डबल फॉल्ट हैं, उसके बावजूद इस मुकाबले में अच्छी खासी पोजीशन में है वैष्णवी अडकर। थोड़ा सा बाहर रहा, 30 ऑल। लेकिन इस होनहार खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय खेलों में अलग एक छवि अपनी पैदा की है। टेनिस प्रेमी ही नहीं, तमाम खेल प्रेमी भी इस खिलाड़ी के खेल को सराहने पर मजबूर होंगे। Not the time to lose control over the situation, especially when you have a good lead going and you are serving. I think Vaishnavi, a few errors here and there, trying to speed up the process is not going to get her, points in her favor. She'll have to maintain her cool, continue playing the way she was, taking time, and play well executed points. ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक ब्रेक पॉइंट है जील के पास। अगर वो हासिल करती हैं तो इस मैच में वापसी करने में कामयाब होंगी, और बिल्कुल वही हुआ। ब्रेक हासिल किया वैष्णवी के खिलाफ। ये पहला ब्रेक है इससे पूरे मुकाबले में वैष्णवी के खिलाफ जील देसाई का। अब सर्विस होल्ड करते हैं, एक और ब्रेक के सहारे इस सेट में वापसी कर सकती हैं, और सेट जीतना मस्ट विन सेट है। ये जीतती रही हैं जील, तो इस सिंगल्स को वैष्णवी अपने कब्जे में करेंगे, यानी महाराष्ट्र अपने कब्जे में करेगा। देखिएगा किस तरीके से पिछला पॉइंट अर्जित किया। You won one game and you want to go strong now with your serves. Not the time for some double faults. She'll really have to improve and increase the level of her play if she wants to make a match of it in the second set. And serves are definitely going to play a very important role here if she wants to get back and shorten the lead against Zeel Desai. Too many errors from the center of the court. You have the opportunity, playing to your advantage. It's very important to have a good setup, using your feet well to quickly prepare for the points faster gives you an advantage to hit the balls better. Very similar played shots behind the baseline, missing them by a very minute margin. Zeel seems to be trying for too much here in this game. Smart play there by Zeel Desai. I've barely seen her come up to the net, only unless she's forced to, and I think this might give her a bit of an advantage, because she's the one who's been on the defense throughout, running from one corner to another. बढ़िया रिकवरी की, 2 ब्रेक पॉइंट बचाए हैं जील ने। कई बार होता है ब्रेक हासिल करने के बाद अपनी सर्विस को होल्ड करना चुनौती भरा हो जाता है, हो जाया करता है, और वही जील के हिस्से में दिखाई दिया।
लेकिन फिलहाल 2 ब्रेक पॉइंट सेव किए हैं। एक और की आवश्यकता है झील को, अन्यथा मैच की स्थिति वही हो जाएगी जो एक गेम पहले थी, ब्रेक हासिल करने से पहले थी। What a great return there by Zeel. Not succumbing to pressure, keeping her cool, hitting that great backhand down the line. Totally unexpected at this point of time, but what a great shot nevertheless. Well, she was down love 40, saved 3 big points. Now has the advantage. It's time to hold serves with 1 good point. Zeel having the opportunity to narrow in on the lead against her. रिटर्न फाइनली एडवांटेज गवाया। सेकंड सर्व कभी भी उतना मुश्किलें पैदा नहीं किया करती है रिसीवर के लिए, और वही हुआ। एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, डीप रिटर्न। झील को नेट पर खेलने पर मजबूर किया। 40 ऑल ड्यूज। Not the time to let go of opportunities. You know, once you've fought it out, saved 3 big points, got an advantage, you need to really have a good solid serve to serve it out. Especially when you are playing against a big returner like Vaishnavi, who doesn't hesitate to go for her shots. She is going to pounce on that weak second serve. There she does it again. Vaishnavi Atkar breaking serves, taking a 4-1 lead in the second set with a 6-4 lead in the first as well, giving Maharashtra the upper edge in this first match of the women's singles team event finals of the 36th National Games here in Gujarat. We have Prashant Sengar and Ankita Bhamri from the commentary box. इससे बेहतर जवाब नहीं दिया जा सकता था एक युवा खिलाड़ी के द्वारा। ब्रेक का जवाब ब्रेक से दिया वैष्णवी ने। 6-4 ऑलरेडी पहला सेट वे जीत चुकी हैं। दूसरे सेट में एक समय 3-0 अप चल रही थी, लेकिन चौथा गेम वो ब्रेक दे बैठे झील को, पर उसके बाद जो जवाब दिया वो आप सभी ने देखा। पांचवें गेम में ब्रेक हासिल किया, प्रत्युत्तर दिया। अब 4-1 से बढ़त है। यहाँ सर्विस होल्ड करते हैं तो इस मैच में, इस सिंगल्स में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करेंगी। At one point of time in the last game, I did think after saving 3 big points that Zeel is going to end up holding serves and, you know, shortening the lead. That could have really changed the momentum of this second set. You know, putting Vaishnavi under some pressure would have definitely helped. She hasn't enjoyed a lead at all in this match. You know, consistently being down after the breaks of serve that we saw initially on in the match. और एक युवा खिलाड़ी के चेहरे से सब कुछ झलकता है। वो लुत्फ भी उठाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। ये देखने लायक रहा करता है। वैष्णवी सर्विस होल्ड करेंगी, 5-1 हासिल करेंगे, और 5-1 की लीड किसी भी सेट में बहुत बड़ी लीड होती है। ये सेट जीतते हैं जो मस्ट विन सेट कहलाएगा झील देसाई के लिए।
सिंगल्स हिस्से में जाएगा महाराष्ट्र के लिए। थोड़ा सा बाहर रहा, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा बाहर रहा, थोड़ा सा आसान ले बैठी, इतना मुश्किल नहीं था। कैजुअल शॉट से थोड़ा सा परहेज करना होगा वैष्णवी को। लॉ 15। Oh, that net cord giving Vaishnavi a lucky break and a great passing shot there, cross court, making it 15 all. Zeel does have the capabilities of pushing Vaishnavi far behind the court. I have seen her play very consistently. But she hasn't been able to do that well so far in this match here today. You know, we did see her being consistent early on in the match in the initial few games, making Vaishnavi run from corner to corner. But she hasn't been able to successfully manage to do that. You know, consistently point over point. That was a good, you know, slow pace second serve by Vaishnavi. High onto Zeel's backhand. Zeel unable to read that and hitting the ball in the net. Two chances to hold serves here for Vaishnavi Atkar. और ये देखने को मिला है जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहा करते हैं, थोड़ा सा कैजुअल खेल जाया करते हैं। ये कल बहुत ज़्यादा आया था, आज हालांकि उससे थोड़ा सा अपने आप को संभाला है वैष्णवी ने, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अच्छी पोजीशन है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट हासिल कीजिए जल्दी से जल्दी। जीत मिली युवा खिलाड़ी वैष्णवी को, 5-1 की बढ़त हासिल की। 13 टाइम बॉल एक्सचेंज हुई है, मैंने काउंट किया, ये अब तक की सबसे अच्छी रैली रही, सबसे लंबी रैली रही इस सेट की, नहीं इस मैच की। If you look at the highlights of this point, Prashant, you'll notice that this is exactly what I was talking about. Zeel has the ability to maintain her depth and pace on these long rallies, and she needs to keep doing it more often and not give Vaishnavi a chance to step up and you know, add pace and attack those shots. She has to keep her behind the baseline in uncomfortable situations to get an advantage into her favor. Slightly unlucky with the net cord in the previous point, but I feel that if she does it again and again, she can get the opportunity and get better at it, especially against Vaishnavi in this match. Break 4 in cross court. 30 लाओ। झील देसाई
अब हर गेम उनके लिए मस्ट विन गेम रहेगा। इस सेट में जो गेम गंवाएंगी, चाहे सर्विस हो अथवा रिसीविंग हो, हर गेम को उन्हें जीतना होगा। अन्यथा ये सिंगल्स महाराष्ट्र के हिस्से में जाएगा और वैष्णवी कभी कोई कमी छोड़ती नहीं है। 100%, 110% रहा करती हैं। इनका कोर्ट कवरेज देखने लायक है, इनके शॉट्स देखने लायक है, इनकी रिसीविंग देखने लायक है, इनकी सर्विस, अगर फर्स्ट सर्विस इनकी परफेक्ट पड़ती है तो वो भी आनंद दिया करती है तमाम खेल प्रेमियों को। A good first serve there by Zeel, giving her a 40-15 lead in this 7th game. She's in a very tough situation, down 1-5 in the second after losing the first set, and she'll really have to stay calm and composed and play some top tennis to get out of the situation. Another double fault there by Zeel. Second one in this set, I believe. Ouch. Pushing Vaishnavi back deep into the backhand corner, especially definitely proved to be advantageous in this point, giving her a chance to hold serves. Still 2-5 down. Zeel Desai representing Gujarat. Vaishnavi winning the first set 6-4, 5-2 in the lead and serving to win the set and match. बारीक सा अंतर था बैक इन कॉर्नर पर जो डीप रिटर्न किया था। कई बार लक भी आपका फेवर किया करता है, बशर्ते आपने एफर्ट थोड़ा सा साहसिक किया हो, तो वही देखने को मिला। डीप बैक इन कॉर्नर पर रिटर्न वैष्णवी को बाहर खेलने पर मजबूर कर गया। स्कोर है इस समय 5-2 वैष्णवी के पक्ष में। एक होल्ड इस सिंगल्स में महाराष्ट्र को इस टाई का पहला सिंगल्स जिता देगी, यानी 1-0 अप होगा महाराष्ट्र मेजबान गुजरात के खिलाफ महिला टीम चैंपियनशिप का। ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले का पहला सिंगल्स ज़ील देसाई वर्सेस वैष्णवी अडकर। स्कोर लाइन आपके स्क्रीन पर है। सेकंड सेट चल रहा है जहां 5-2 से लीड कर रही हैं वैष्णवी अडकर। I think Vaishnavi has been pretty fearless in her game today. You know, she's played the points very confidently, stayed on top of the ball, played the balls to her advantage, and she has been doing that really well today in this match so far. She's held on to her service games and served out beautifully at some occasions as well. इसके पीछे दो बातें रहा करते हैं अंकिता, जहां तक मेरी समझ में आता है। एक तो ये कि आप टीम के साथ खेल रहे हैं, दूसरा ये कि छोटी आयु की हैं, पहला सिंगल्स, आपके पास गंवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी के खिलाफ आप सब कुछ दांव पे लगा सकती हैं, निर्भीक होकर खेल सकती हैं, और वही कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया वैष्णवी के बारे में। Go for too much here too soon. I mean, it's important to stay in the points and to continue, you know, and to build on the opportunity. Not the time here to rush into things.
But I think the return of serve has been a great treat to watch. She's been sharp on point, Vaishnavi. And has really put Zeal under pressure when she's been serving. I think with those big returns, Zeal has never been in a comfortable position all throughout this match. बेसलाइन रिटर्न्स इनके देखने लायक रहा करते हैं, या अपोनेंट को ये लगा करता है कि शायद बेसलाइन के बाहर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वेल कंट्रोल्ड स्ट्रोक रहा करते हैं उनके. 30-15. अच्छा चिप शॉट बैकहैंड के जरिए. ये भी खेल की एक बड़ी काबिलियत रहा करती है. 2 सेट पॉइंट हैं इस समय. 40-15. सर्विस आपके पास, ये एडवांटेज हुआ करता है. 2 सेट पॉइंट, मैच पॉइंट ऑल्सो. को जीता. सेकंड सर्विस बैटर रही, बाहर खेलने पर मजबूर किया, दबाव पैदा किया. विपक्षी को इस मुकाबले में पूरी तरीके से परास्त किया है. खेल के दृष्टिकोण से मानसिक तौर पर बैक सिंगल्स महत्वपूर्ण रहेगा, जहां अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले आमने सामने होंगी. 2 बड़ी प्लेयर नेशनल रैंकिंग में 4th हैं इस समय ऋतुजा, जबकि टॉप रैंकिंग है देश में अंकिता रैना की. लेकिन ये सिंगल्स महत्वपूर्ण रहा है. 6-4 6-2 ये कंफर्म स्कोर लाइन. झील देसाई के खिलाफ वैष्णवी ने अद्भुत खेल का परिचय दिया. I think we saw a very well executed match here by Vaishnavi, really improving the level of her performance from yesterday. I think returns and baseline play proved to be a real, I think, key points that worked in her favor. She put Zeal consistently under pressure, trying to go for deep shots with a lot of pace and spin. I think that's where, if we look at the highlights, we'll see some really good tennis by both players, but Vaishnavi definitely being the one ahead throughout. इसमें कोई संदेह नहीं. ये हाइलाइट्स हैं. पिछले सेट में किस तरीके से कुछ अच्छे ड्रॉप्स देखने को मिले, कुछ डीप स्ट्रोक्स देखने को मिले. आपका प्लेसमेंट सबसे अच्छी बात, फुल माइंड होकर खेलना इस युवा खिलाड़ी के हिस्से में आया. इस मैच में कम से कम उन्होंने चांस कम दिए, एरर्स कम देखने को मिले. 17 वर्ष की उम्र में अगर आप ये हासिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कम टेनिस जैसे खेल में बड़ी भूमिका आने वाले वर्षों में अदा कर सकते हैं. संभावनाएं इस खिलाड़ी ने टेनिस में बड़ी पैदा की हैं देश के लिए. Second tie in this final match of the women's singles final where Gujarat is playing Maharashtra. It's going to be a very tough match, and I think very exciting for us to watch of who proves to be the winner in the end. Rituja and Ankita Rana have both played each other quite a few times. They've literally trained with each other, for a few years with Coach Hemant Dingre, so they are very familiar with each other's style. That's Vaishnavi celebrating on screen after her win. A big win against Zeel Desai of Gujarat. We just witnessed and saw the first match of the women's team event. Singles winner Vaishnavi Atkar from Maharashtra, giving Maharashtra a 1-love lead in the finals against Gujarat. We are at the beautiful location in Ahmedabad at the Sabarmati riverfront, watching the live singles finals. With me
Ankita Bhamri and Prashant Sengar in the commentary box. तो कुल मिलाकर इस मुकाबले को जीता महाराष्ट्र के लिए वैष्णवी अडकर ने। तो पहला सिंगल्स नतीजा हासिल कर गया है, वैष्णवी ने जीत हासिल की, परास्त किया अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी जील देसाई को। इस टीम चैंपियनशिप महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला, पहला सिंगल्स खत्म हुआ है। दूसरा सिंगल्स थोड़ी देर बाद प्रारंभ होगा, जहां अंकिता रैना सामना करेंगे ऋतुजा भोसले का। ये दिलचस्प रहेगा। नेशनल रैंकिंग 4th और नेशनल रैंकिंग 1 आमने सामने होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी ही वापस लौटते हैं इस महत्वपूर्ण सिंगल्स को लेकर।